Right. So मेरी screen visible है सबको? Yes, sir, visible. Okay, perfect. ठीक. So how many people do we have in here? We have 1, 2, 3. Okay. So is there anyone in this class अभी जो last time नहीं थे? Last class में कौन-कौन था? Abdullah was there. Ahmed Ali was also there. Arisha. Okay, I don't know. Where I don't think so that you were present, right? So because these are just very first classes, I think there are some people who are joining in recently every day. So I'll just introduce myself once again very quickly, and then we'll proceed, right? So my name is Basil. I have my degree in theoretical physics from NUST. I have around about 5 years of teaching experience. And if you have taken previous classes as well, you know how much I stress about this thing that you should always ask questions. Don't hesitate. There's nothing will happen. If you have a question, stop me and ask me your questions, right? We have also, okay, so probably these timings will change. And now I want you to tell me, is it okay if we change these timings to Monday to Thursday? These timings, I guess 1:45, if I'm not, let me just confirm this. Give me 1 second. Okay, so yeah, so from 1 to 1:45 p.m. Is that okay? Are you comfortable with that? You can unmute yourself and let me know, please. As so this will also change for Friday as well. If you're comfortable with that, if you have no problem, if everything is still okay, so we'll probably follow these timings from next class. Okay, sir. Okay, perfect. Okay, amazing. So अब हम I guess we'll start our topic. The lectures, online lectures will be shared with you guys as well. So जिसने पिछला lecture नहीं लिया तो it will not be a problem for them. मेरा introduction and everything will be available in those lectures. Anyway, so I think we should start our first chapter. Who was present in the demo class? जो बिल्कुल शुरू में class एक हुई थी. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर क्या डेट थी उस दिन, लेकिन जो डेमो क्लास हुई थी इससे दी फर्स्ट क्लास, उसके बाद आई गेस एक और क्लास हुई है ना, और ये आज थर्ड क्लास है. डेमो क्लास जी में सर. कोई राइट ठीक है. अच्छा, सो डेमो क्लास में बेसिकली आई डिड वेंट ओवर सम थिंग्स. उस टाइम पे असल में मैं आउटसाइड था ना, तो मैं घर पे वगैरह भी नहीं था, तो वो मुझे क्लास से बिल्कुल एक उस तरह से लेनी पड़ी थी जिसमें एक एनवायरनमेंट ठीक नहीं था. तो दैट क्लास आई डोंट नो हाउ इट वेंट फॉर यू गाइस, बट इट वाज नॉट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग. लेकिन उस क्लास में हमने कुछ चीजों को कवर अप किया ही था. हमने फिजिकल क्वांटिटी, सिग्निफिकेंट फिगर्स और इन सब के बारे में बात की थी. तो जस्ट ओवरव्यू करते हैं. आप लोगों को आइडिया तो होगा, वैसे यू आर फेमिलियर विद दीज थिंग्स राइट? फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, ये तो बिल्कुल बेसिक फिजिक्स है ना, राइट? सो लेकिन हम स्टार्ट करते हैं इसको. we'll start with this first topic of physical quantities. अगेन फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो और जिनमें आप फिजिक्स के लॉज को लिखते हो. You write down your laws of physics in these quantities. Acha, someone requested me to
prepare the or to deliver the lecture in Urdu, are they present? अभी वो हैं their class में? अच्छा, I guess not. Anyways, तो अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. आप कंसिडर करें कि यू हैव अ ब्लॉक, ठीक है, एंड अभी यू डोंट नो व्हाट इज अ फोर्स, आपको ये नहीं पता डिस्टेंस क्या है, यू डोंट नो एनी ऑफ दीज थिंग्स. सो व्हाट हैपेंस इज कि आप इस ब्लॉक को ना धक्का लगाते हो, द ब्लॉक मूव्स, कुछ एक जगह कवर करेगा, आगे की तरफ जाएगा, मूव करेगा, राइट. सो अब आपको इसकी फिजिक्स डिफाइन करनी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट. यू वांट टू डिफाइन के यहाँ पे फिजिकली हुआ क्या है. सो वो चीज डिस्क्राइब करने के लिए जो चीज आप यूज करते हो, वो उन वेरिएबल्स को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. तो फॉर एग्जांपल जो आपने धक्का लगाया है, अब आप उसको एक वेरिएबल देना चाह रहे हो, उसको एक फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएट करना चाह रहे हो, तो वो उसको हमने फोर्स कहा है. सो दैट्स द फोर्स. एंड फिर इस ब्लॉक ने या ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस मूव किया, जितना ये एक इस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक गया है, तो उसको हम कह देते हैं कि भाई ये वो डिस्टेंस है जो इसने मूव किया. सो दैट्स द डिस्टेंस मूव. डी कह लो, एल कह लो, और एक्स, राइट. यू कैन यूज एनी ऑफ द फिजिकल, you can use any of the variable, but that is the same physical quantity. So ये physical quantities का concept तो clear है, right? If there is any question at this point, you can ask me. नहीं है, कोई question नहीं है. ठीक है, so I guess I'll proceed further. So I don't know आप लोग अगर questions पूछते हैं या नहीं पूछते. So अभी at least starting में I'll stop in between after every few topics and then I'll ask you कि अगर आपका कोई question है. लेकिन इससे थोड़ी सी लेक्चर की शायद स्पीड स्लो हो जाए, तो इट्स बेटर कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, सो जस्ट फील फ्री एंड फायर अवे, राइट. ओके, सो फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं, दे आर डिराइव्ड और सॉरी दे आर डिवाइडेड इनटू अ ग्रुप ऑफ टू क्वांटिटीज. एक आपके पास बेस क्वांटिटीज हैं और दूसरी आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, राइट. सो let's move on. So what are base quantities? Base quantities ऐसी quantities होती हैं जिनके लिए आपको जो independent होती हैं from any other variable or any other quantity. So you have length, mass and time. ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं बेस क्वांटिटीज के, राइट. सो यू कैन थिंक ऑफ के अगर आप एक पिज्जा बना रहे हो, ठीक है, आई डोंट नो ये लिख क्यों नहीं रहा. ओके, आपके पास स्क्रीन आ रही है ना? हेलो. जी सर, आ रही. ठीक है, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट. सो सपोज कि यू आर मेकिंग अ पिज्जा. सबसे पहले आप उसकी डो तैयार करोगे, राइट. एंड फिर आप चीजें ऐड करते हो. तो पिज्जा बनाने के लिए जो सबसे फंडामेंटल चीज आपको रिक्वायर्ड है, वो उसकी डो है. सो दैट्स द बेस ऑफ द पिज्जा. सो इन दैट सेंस यू कैन थिंक ऑफ बेस क्वांटिटीज, राइट. एंड फिर आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, एंड दीज क्वांटिटीज आर made up of base quantities. So for example, you have velocity. It is made up of length and time in such a way कि length quantity divided by time quantity आपके पास एक नई physical quantity बनती है जो आपके पास velocity है. तो normally आप इसको represent करते हो L T minus 1 के साथ. So this is how you write down the dimensions, right? So इसी तरह you have force, you have acceleration. So that's more or less physical quantities में mainly यही बात है. Then आपके पास scientific notation का topic है, right? अच्छा, so scientific notation. अब आप you have a number, right? And suppose that number is a very large number, ठीक है. So you want to make your life easy. So what you do is, suppose you have a number 1000000. Instead of writing अपनी number calculations numbers में, instead of writing this number so many times,
आप इसको into 10 raised to power, कोई पावर इधर आप डाल सकते हो, let's just call it n for now, ठीक है? So for example, for this number n will be equal to the number of zeros जो अभी यहाँ पे मेरे पास है. So I have 1 2 3 4 5, so it would be 10 raised to power 5. So main मकसद scientific notation का है to express a number in powers of 10, right? Or now we have यहाँ पे कुछ standard prefixes हैं for scientific notations. We have 10 raised to power 3. इसको हम एक नाम दे देते हैं किलो, right? So whenever you see a number जिसके साथ 3 zeros हैं, that's what 10 raised to power 3 means, right? So you call this as k, which is kilo, right? So you have more, you have giga 10, which is 10 raised to power 9, which just means के 1 के साथ आपके पास 9 zeros हैं. That is similarly pico, nano and femto. ये pico, nano and femto are the ones जो आपके पास 10 raised to power minus 12 हैं. So instead of 1 के right side पे 0 नहीं आएगा, 1 के left side पे 0 आएगा, और decimal point भी 1 के left side पे आएगा, right? So is this thing clear? इसमें कोई issue तो नहीं है साइंटिफिक नोटेशन वाले जो अभी तक जो हमने डिस्कस किए? क्लियर है सर. ठीक है, परफेक्ट. सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल एट दिस पॉइंट ना. एक आपके पास, सपोज यू हैव 2 kilograms. अच्छा, आपको ये कॉन्सेप्ट तो पता है कि इफ आई राइट 7x, तो इसका क्या मतलब है algebraically? what does this mean? Algebraically this just means 7 times x, right? ठीक है, सो आई एम श्योर के यू ऑल नो व्हाट दिस इज, राइट? सो इसी तरह यहाँ पे यू हैव 2 kilograms. सो k इज जस्ट बिहेविंग लाइक एन x ओवर हेयर, और उस k की जो वैल्यू है वो आपके पास है 10 raised to power 3, और यू कैन से इट इज 1000. सो इसका सिर्फ ये मतलब है कि यहाँ पे हो ये रहा है 2 times k और साथ g, वेयर इनफैक्ट इवन ये ग्राम्स भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है k के साथ. But let's write it like this. Now, what is K? K is 1000 and you have 2 and G. So this gives you 2000 grams. So conversion जो है ना, some students, they have problem in converting from one unit to another unit. So I think this makes it very easy अगर आप इसको इस sense में सोचें. So similarly, if you have 1 centimeter, तो ये कितने मीटर्स होगा? इट्स वेरी इजी टू डू इट कि अगर आपको इस कॉन्सेप्ट का आइडिया हो कि नाउ सेंटी क्या है. सेंटी इज 0.01. अगर 0.01 है ना, तो दैट्स नेम्ड एज सेंटी, एंड उसके लिए जो आपके पास लेबल है ना वो सी है, राइट? सो अगर मैं इधर सेंटी की वैल्यू पुट कर देता हूँ, सो आई हैव 1 into 0.01, और बाकी क्या रह गया? मीटर, m, तो मीटर्स वो लिख गया. सो दैट मीन्स 1 centimeter is equal to 0.01 meters, or 1/100 meters. So prefixes का ये, if you understand prefixes very well, then you converting from one unit to another unit is a piece of cake, right? So it's very easy. So if all of this is clear, तो फिर हम आगे move करते हैं. Is there any problem in this thing? Okay, I guess not, right? Clear है sir. ठीक है, perfect. So now let's move on to error, and हम इन चीजों को जरा थोड़ा quickly go through करेंगे. Error basically क्या होता है? Error आपके पास ये है कि आपने for example lab में आप एक वैल्यू मेजर कर रहे हो, ठीक है? You're performing an experiment in lab, ठीक है? और वहां से आप, let's suppose कि आप एक वैल्यू किसकी मेजर कर रहे हो? आप एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी मेजर करना चाह रहे हो लैब में, ठीक है? आप लैब में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो which will measure this value for you, एंड लिटरेचर में जो इसकी वेल नोन काफी अच्छी जगहों पे जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स हुए हुए हैं, एंड इवन फ्रॉम थ्योरी, जो आपके पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू सेट है उसके लिए, which you know it has the highest accuracy and precision.
तो ये दो वैल्यूज आपके पास हैं। अब आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि मेरी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसमें एरर कितना है। तो वो दैट इज सिंपली कि जो आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू है जी की, उसमें से आप अपनी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को माइनस कर दो। तो अगर आपके पास दो केसेस हो सकते हैं, आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट आए या आपके पास नेगेटिव रिजल्ट आए। ठीक है, सो इफ आपके पास एक पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो इसका मतलब है आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो इट इज लेस कंपेयर टू द ओरिजिनल वैल्यू, एंड नेगेटिव आ रहा है तो इट इज मोर कंपेयर टू द स्टैंडर्ड वैल्यू, राइट। और इफ इट इज जीरो विच इज वेरी अनलाइकली, तो दैट मीन्स कि दोनों आपने बड़ी अच्छी एक्यूरेसी के साथ अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए एंड आपकी जो एरर है वो एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन यू हैव टू रिमेंबर दिस कि इवन इन फिजिक्स और इन नेचर आपके पास एरर जो है ना, इट इज बाउंड टू बी देयर। ठीक है, सो विद किसी भी आपके पास कोई भी आप वैल्यूज मेजर कर रहे हो, देयर विल ऑलवेज बी सम एरर इन दोज वैल्यूज, राइट। ओके, सो देन आपके पास यू हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स। आपके पास एक है असाइनेबल एरर और फिर आपके पास है अनअसाइनेबल एरर। अच्छा, असाइनेबल एरर्स वो होते हैं जो जिनको आप लोग सिस्टमैटिक एरर्स भी कहते हो, राइट। सिस्टमैटिक एरर्स। और अनअसाइनेबल होते हैं जो आपके पास रैंडम होते हैं। ओके, सो इन असाइनेबल एरर्स आपके पास क्या होता है कि आप एक कॉज जो है ना वो असाइन कर सकते हो अपने एरर के लिए। और उसकी वजह ये होती है बिकॉज आपके जो एरर्स हैं दे आर बेसिकली फॉलोइंग अ सेम पैटर्न। एक पर्टिकुलर पैटर्न पे चल रहा होता है आपका एरर। तो इस वजह से आप उसको एक कॉज दे सकते हो कि अच्छा ये इसका कॉज है जिस वजह से आपके पास ये एरर्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक इंस्ट्रूमेंट ले लो, वर्नियर कैलिपर ले लो फॉर एग्जांपल, उसका एक लीस्ट काउंट होता है। वो लीस्ट काउंट जो है ना, उसकी वजह से आपके पास एक एरर आता है। और क्योंकि उसकी एक मिनिमम वैल्यू है जो वो काउंट जहां तक कर सकता है, राइट। सो देयर इज एन एरर बिकॉज ऑफ दैट, और वो एरर assignable error है because you can assign a cause and that cause is the least count in for example, अगर आप एक वर्नियर कैलिपर या किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करो, every measuring instrument also by the way has a least count, right? Okay, and so you can control your ये assignable errors, systematic errors, आप इनको experimentally control कर सकते हो। अगर आपने कभी जिसको आप लोग I think weigh machine कहते हैं हम, but it actually measures your mass। लेकिन जब आप if you're using an analog one, पुराने जमाने में जो यूज करते हैं, उसमें उसको आप जब उसका डायल मूव करो तो you can remove the error, right? So the example I'm giving you at the moment is of zero error, right? So those errors can be controlled experimentally and you can reduce them as much as possible। फिर आपके पास है अनअसाइनेबल एरर्स। ये उस तरह के एरर्स हैं विच आप इनको एक्सपेरिमेंटली कंट्रोल भी नहीं कर सकते। ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि द रीजन फॉर दैट इज कि ये जो आपके पास एरर्स हैं इनमें आप इनको एक कॉज नहीं असाइन कर सकते बिकॉज दीज एरर्स आर कंप्लीटली रैंडम। So they do not follow any particular pattern, right? Because there is no such pattern that you can observe कि यहाँ ऐसे 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 तो एक पैटर्न बना लिया कि अच्छा ये इस whenever you have a pattern in nature, तो वहां से आपको कुछ पता चल रहा होता है, right? But अगर आपके पास if you don't have any pattern, so you cannot assign any cause, and hence आपका जो error है उसको हम random error term कर देते हैं। और ये एरर्स जो हैं आप इनको कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। सो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम एवरेज वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है, सो अगर आप एक लैब में यू आर मेजरिंग सम वैल्यू, फॉर एग्जांपल हम ये एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी की एग्जांपल ले लें। आप इसको मेजर करना चाह रहे हो, आप इसको मेजर कर रहे हो, एंड आप एक दफा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, आप दूसरी दफा करो, तीसरी दफा, सो टेक मल्टीपल रीडिंग्स, राइट। सो व्हाट दैट डज इज दैट इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ राइट आंसर, and so then you can just take the average of those values, और फिर हम average value use करते हैं, which is well we call it the correct value of g। ठीक है, so any problem up until here? No, sir. Okay, perfect।
So let's, I think next page ये है हमारे पास. अच्छा ठीक है. So then हमारे पास टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स का. ये आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो हमारे लिए जरूरी क्यों हैं? व्हाई डू वी नीड सिग्निफिकेंट फिगर्स? इसकी रीजन ये है कि आपके पास, मैंने जिस तरह आपको बताया कि इन एवरी वैल्यू दैट यू विल टेक इन फिजिक्स, और जब भी आप कोई भी वैल्यू इन फिजिक्स से मेरा मतलब यही होता है कि आप नेचुरली कोई भी आप वैल्यू किसी चीज की भी मेजर कर रहे हो, so that falls into the realm of physics basically. Anyways, तो आपके पास अनसर्टेनिटीज होती हैं वैल्यूज के अंदर, राइट? सो यू हैव एरर्स इन योर मेजरमेंट्स. इस वजह से आपको एक स्टैंडर्ड चाहिए जिससे आप अपनी सारी वैल्यूज की जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, उसके नेम सेज इट ऑल, राइट? सो जो उसकी जो फिगर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें कुछ इंफॉर्मेशन बता सकते हैं, we want those figures and we ignore the rest of the figures in that particular measurement, right? So it's just a standard of writing a numerical value of a measurement. ठीक है. और हम इस तरीके से लिखते हैं कि आपके पास सारे जो डिजिट्स आपके पास एक्यूरेटली नोन है ना, जो आपको पता है कि हाँ भाई ये डिजिट तो कंफर्म है विद नेचर, कि ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इसके डिजिट्स कंफर्म हैं विद लिटरेचर वैल्यूज एंड एवरीथिंग, राइट? विद थ्योरी जो आप प्रेडिक्शंस वगैरह करते हो, वो सारे डिजिट्स, और फिर फर्स्ट डाउटफुल डिजिट हम उसमें इंक्लूड करते हैं. तो जैसे आप यू आर लुकिंग एट अ नंबर, यू आर लुकिंग एट कि इसके अंदर इतनी वैल्यूज हैं, इसमें दीज मच वैल्यूज यू नो कि दे आर ट्रू, एंड फिर एकदम से पहली जो अगली वैल्यू है वो आपको डाउटफुल है, तो आप उस वैल्यू तक अपना सिग्निफिकेंट फिगर रखते हो. सो दैट्स योर सिग्निफिकेंट फिगर्स. देन वी हैव सम रूल्स फॉर, if that was not enough, then you can write down some rules for writing down your significant figures. So here are some rules. The first one is कि आपके जो सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे डिजिट्स सिग्निफिकेंट हैं. ठीक है, जो भी डिजिट आपका जीरो नहीं है वो आपके पास सिग्निफिकेंट है. सो दैट्स रूल नंबर 1. सो हियर यू कैन लुक एट एन एग्जांपल 3.456. हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स वी हैव? 4, बिकॉज इसके अंदर आपके पास ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो दीज आर सिग्निफिकेंट. सिमिलरली इन दिस आई हैव 6 digits, right? 1, 2.3456. So I have 6 digits, then sare significant hai. Then we have zeros between non-zeros are also significant. तो for example आपके पास ये एक ऐसा नंबर है 2306, इसके अंदर जीरो जो डिजिट आ रहा है वो दरमियान में आ रहा है दो नॉन जीरो डिजिट्स के, 3 और 6 के दरमियान में आ रहा है. तो अब ये पूरा नंबर सिग्निफिकेंट फिगर है. सो इसके अंदर आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए. इसी तरह this is an example. So you have 2 zeros between your non-zero numbers. So there are total 6 numbers. So we have 6 significant figures, right? And then you have that zeros जो हैं, zeros locating the position of a decimal point in your numbers which are less than 1. So आपका number जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए, which just means कि it will be something like 0 point something, right? So that's a number that is less than 1, 0 point something. ये वो डिजिट्स हैं, ये वो जीरोस हैं जो नॉन सिग्निफिकेंट हैं. So these zeros don't matter. So for example, you have this number 0.000458. इसके अंदर ये zeros जो हैं आपके पास, जो decimal point को locate कर रहे हैं, वो आपके पास significant नहीं है. इसी तरह you have final zeros to the right of the decimal point are significant. So for example, you have a number 3.0 or 3.0000. So इसमें जितने भी decimal point के बाद zeros हैं, these are significant figures, right? And then finally we have that zeros that locate decimal point in numbers which are greater than 1. They are not significant. Okay, so for example, this is the number, you have 30000. So these zeros are not significant. You don't need them in your value. So आप इसको फिर किस तरह prefix का इस्तेमाल करके आप इसे लिख सकते हो, 3 into 10 raised to power 1, 2, 3, 4. So we have 4 zeros. So you can write this number like this. Okay, or you can say 3.0 into 10 raised to power 4. So that's clear, right? So यहाँ तक कोई question? No question? Okay. So next we have
algebra with significant figures. How do we perform the arithmetic using significant figures? It's very simple. You have division, multiplication. आपने इन दो numbers को multiply करके इससे divide करना है. Once you do this, you get something which is like this. It's a very long number. So you see कि the minimum number of digits after a decimal point क्या है, तो हम उसको उतने digits तक लिख सकते हैं. So you have this value can be written as 7.89, right? Okay, so this is very obvious note जो आपको कह रहे हैं कि a factor having smallest number of significant figures in your value is the least accurate, right? So जितने ज़्यादा आपके पास values हैं to specify something, so that number is more accurate compared to जो आपको थोड़ी सी values बता रहे. It is not giving you any information बाद में क्या values हो सकती थी इसकी decimal point के. So it's not giving you that information, so that's why it's not accurate, right? And then you have addition and subtraction. It's also very simple. आपके पास दो numbers हैं, आप उनको add कर रहे हो. It gives you a number, and then you see the minimum number of decimal points was 2 here, 2 values after the decimal point, and so you can write down your number with that accuracy as 27.86, so 2 digits after the decimal point. So I don't think इसमें कोई भी issue होगा, right? So if there is, you can ask me, otherwise we'll move on to the next page. Okay, so next we have rounding of our data. So there are some rules to rounding off our data, and so the first rule is कि अगर आपने जो digit drop करना है अपने number में, when you're rounding off something, you're basically getting rid of the other digits, right? So if the digit that you want to basically ignore or drop, if that digit is greater than 5, तो फिर आप क्या करते हो, उससे पिछले digit में last digit में आप +1 add कर देते हो, right? So for example, you have 3.677, and now you look at this thing. If you want to drop this digit, आखिर से start करेंगे ना, so we want to drop this digit, so it's greater than 5, then I add 1 to this 7 and it becomes 3.68, right? And similarly, if you have something that is the digit जो आपको drop करना है, ignore करना है, that is less than 5, then you just drop it right away. So for example, 6.632, I'll just get rid of this 2, and then I'll only have 6.63, right? So then finally, if the digit to drop is exactly equal to 5, what do you do then? So तब आप क्या करते हो कि ओके, सो अगर आपने जो डिजिट ड्रॉप करना है वो 5 है, तो उससे पिछला डिजिट जो है जिसको हमने रखना है बेसिकली वो इवन है, तो फिर आप क्या करोगे, आप 5 को ड्रॉप कर दोगे. सो इफ यहाँ पे एग्जांपल है, यू हैव 6.65 एंड द डिजिट दैट यू वांट टू ड्रॉप इज 5 एंड इससे पिछला डिजिट 6 है. So 6 is even, so I'll just drop off this 5. Similarly, now if you want to drop a digit जो odd है, right, उससे पिछला digit odd है, तो आप क्या करोगे, उसमें +1 add करोगे, so you have 6.35, so you add 1 to this 3 and your number is 6.4. So any questions in this part? Clear है sir. ठीक है, perfect. So that's this. Let me just check ये time वाला जो issue है अभी तक ये properly solve नहीं हुआ. 3 So minutes रहते हैं. कितने minutes रहते हैं? 3. 3 minutes रहते हैं. So I guess we are moving very slow. Would you agree with me कि हम slow move कर रहे हैं? नहीं सर ठीक जी है, सर. समझ तो आया नहीं. अच्छा, नहीं मतलब क्योंकि मतलब इट मे बी एज दो के हो सकता है ये चीजें जो हैं ये बहुत सिंपल हों और मैं इनमें काफी ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ. आई थिंक मुझे ऐसा फील हो रहा है. अगर किसी को प्रॉब्लम है इनमें और वो प्रेफर यही करता है कि मैं थोड़ा सा टाइम लगाऊं इस तरह, तो देन वील डू एग्जैक्टली दैट. अगर सबको लगता है, पूरी क्लास को लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं आप इस चीज के ऊपर, हम बोर हो रहे हैं, मतलब यू नो वो, तो
you can ask me. Okay, I'll speed it up and we can speed up a bit. थोड़ा सा. Anyways, अब हम next topic पे आ जाते हैं, precision and accuracy. अच्छा, it's very easy. If you have probably even seen some examples of precision and accuracy, जिसमें वो एक dart board के ऊपर आपको दिखाते हैं. So if you have this board and this is the point that you want to hit, और अगर आपके जो darts हैं वो इधर 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 और मतलब इधर इधर जा रहे हैं, so the darts are neither precise nor they are accurate. क्योंकि accurate तब होंगे जब वो आपके जो जिस point को आप hit करना चाहते हो ना, अपने अपने mind में रखा मैंने इधर hit करना है, bullseye, right? But you're not getting to hit that point and your darts are all over the place. Basically, you can see that these darts are all over the place. So it's neither accurate nor it's precise. But if I have something that looks a bit like this, जहाँ पे मेरे पास ये है, hit the target that I have to hit, and I throw some darts and they all land somewhere like this, इस points पे जाके land होते हैं. Now they're still nowhere close to the point that I wanted to hit, जिसको मुझे hit करना था. But the darts जो मैंने फेंके हैं, at least इस बार वो एक दूसरे के तो करीब है ना. So that's where I say कि मेरे जो darts हैं वो मैंने precisely फेंके हैं. ठीक है? But that's still not something very great because I'm still very far away from my target. And then I can have something that looks a bit like this, जिसके अंदर मेरे darts जो हैं वो इस point के ऊपर exactly hit करे. ठीक है? Then this is accurate, right? And if a lot of darts hit at this point, then it's accurate and precise as well, right? So I guess that clears this thing, precision and accuracy wala part. So basically from this, what we learn is that precision is, or it is actually also defined as the least count of आपका कोई भी measuring instrument है. तो उसका जो least count है, वो precision जो है ना, वो वहां से define होता है, determine होता है. And basically इसका ये मतलब हुआ कि जितनी चीज precise है, उतना ही उसका least count छोटा होगा. Then you have accuracy, and accuracy is simply कि आपकी जो accuracy depend करती है basically fractional error के ऊपर आपके instrument में. ठीक है? Which just means कि आपके पास, for example, you have fractional error just means कि your errored value divided by the actual, original, whatever you want to call it, right? Actual value. And if I just multiply this with 100%, then it gives me fractional percentage uncertainty, right? Okay, so jitni zyada aapke paas cheez accurate hai, your reading, your measurement, the more accurate that is, then means that smaller percentage error will be there. Acha, can you just tell me how much time is left? Less than 1 minute. Less than 1 minute. Okay, so I think we'll end the class over here. आप मुझे बता दें कि am I going too slow, or is there anyone who would say कि नहीं ठीक है? मुझे तो ठीक लग रहा है. अच्छा ठीक है. अगर किसी कोई एक भी है जो कह रहे